हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अराउंड 10:15 हो रहे हैं। सो टुडे वी हैव विद अस रक्षित एंड जसकरण एंड आई एम शिवांश. So we are just noobs who are just interested in international relations. We do not have any kind of expertise in international relations and सिर्फ फन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि हाँ हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ होता है इंटरनेशनल रिलेशन का. So मजे मजे में पॉडकास्ट बना रहे हैं. So if you are listening to this, then it is definitely 100% sure कि you do not have good resources regarding international relations. So please go find someone valuable to listen and to read to. Like मतलब हमारा क्या ही करोगे सुन के, हम उनकी बातें बस मे बी हिंदी में बताएंगे, I guess. So let's just start with it. First of all, I will ask Jaskaran to introduce himself थोड़ा सा बताने के लिए. So yes, Jaskaran. Hi guys, yeah, I'm Jaskar on this side, and I only agreed to do this to plug in my Twitter account. It's Jaggi Jaskaran with both the J's capital. So if you're listening to this by mistake and you by mistake clicked on this link rather than the Joe Rogan's experience, then you can go and check out my Twitter. This is probably going to be half a shitty experience, anyways. Yeah, so check out my Twitter. Yes. Basically, that's what I'm trying to say. And guys, don't worry. अगर if you are listening to Joe Rogan, we will not cancel you. He's still a little bit good. Okay. So Jaskan is a very big Twitter celebrity with 14 followers. So please go follow him. His tweets are quite amazing. Yes, Rakshit. Yeah, so hi everybody. I'm Rakshit this side. I'm actually the most junior person here, I think, and I am actually a fresher in college. So मेरे को तो basically international relations में बहुत interest आता है. मतलब कुछ भी कहीं पे भी internationally कुछ भी हो जाए मेरे को उधर जाना ही है. मतलब मुझे उसके बारे में पढ़ना ही होता है. And I'm also here to advertise about my Instagram account. It's T1D_Rug. So like I'm also type 1 diabetic. तो थोड़ा बहुत influential kind of thing भी है मेरा. तो please go and follow it. एंड आई थिंक तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये पॉडकास्ट सुन के कि तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिलेगी रिगार्डिंग व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया एंड यूक्रेन राइट नाउ. So yes, रक्षित Right. को लेने के दो रीजन थे. पहला तो वो अकेला व्यक्ति है यहाँ पे जो फॉरेन गया हुआ है, काइंड ऑफ जर्मनी गया हुआ है. सो यस, हमने सोचा कि फॉरेन एक्सपर्टीज इसी नाम से हो जाएगी कि हाँ भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर निकला है. तो सर रक्षित काफी कूल बंदा है. यस, डू चेक आउट हिज इंस्टाग्राम अकाउंट. हिज जर्नी हैज बीन ऑसम. So let's just not talk more about us. So let's just dive into the topic. First of all, as you all know from the basically the title of this podcast, we are going to talk about the new world order and why we are saying so. So मतलब अगर if I have to summarize this in two sentences, we feel here basically all of us feel here that the world is changing and a new world order is being set up after the invasion, after the recent confrontation, the going on confrontation between Russia and Ukraine. By the way, this podcast is being recorded on 24th February. So 23rd February की evening में ही according to Russia time and 24th February की morning में according to India time invasion शुरू हुआ था officially by Mr. Putin. So yes, we are going to discuss about it. So the structure will be key. First of all, we will discuss what is happening. So as you all know who are listening to us, we are not any kind of expert. We are not from any kind of media house. So, but we follow some people on Twitter. We follow BBC, basically other news channels, DW, and other we find non-hyphenated or unhyphenated news channels. And we believe the situation is quite dire. Basically, the Russians have launched an all-out war on Ukraine, if we have to say at the very least. एंड जितना अभी पता चल रहा है कि सायरन्स आर गोइंग ऑफ अराउंड कीव एंड एवरी अदर प्लेस. बाय द वे, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन. एंड जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का जहाँ पे डॉनबास वगैरह रीजन है, सिर्फ वहां तक वॉर लिमिट नहीं है. उसके अलावा भी पीपल आर टेकिंग शेल्टर्स. नो फ्लाइट्स आर रनिंग ऑफ फ्रॉम यूक्रेन. सो एकदम काइंड ऑफ बंद हो गया यूक्रेन, काइंड ऑफ कट ऑफ होने की कोशिश हो रहा है. एंड काफी सारी साइबर अटैक्स की भी इंफॉर्मेशन आ रही है. एंड कहीं रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि सम यूक्रेनियंस आर ट्राइंग टू फ्ली. एंड कुछ रिपोर्ट तो ये भी आई थी अराउंड 5 to 6 आवर पहले. ऑब्वियसली अभी ये वॉर टाइम है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब काफी ज्यादा एकदम से इमोशंस आर वेरी हाई. सो it's like it's hard to verify any piece of news. So one of the report which is coming that Russia has destroyed around 60 or more than 60 basically airfields and other Ukrainian installation, which is a large number. So that is what that is happening according to me.
Jaskar and Rakshit, would you guys like to add anything? Yeah, I'd definitely like to add to that. I had this morning when I woke up and checked out my Twitter feed. Yeah, Jaggi Jaskaran, by the way. There I found out that Russia has finally invaded Ukraine. So that was quite a shock for me because, like most other people, we were thinking about all these warnings, all of what is happening and what might happen. The concept of an actual invasion at such a large scale was not was not really in our horizon, especially the people who are the citizens, because Russia has been playing around with Ukraine, and yes, I'm using that term deliberately, playing around with Ukraine for quite some time, and nobody really expected something on this larger scale to happen. And after that, as any self-respecting man would do, I checked out my portfolio, and it was all red. It basically completely butchered away. Yeah, not just my stock exchange portfolio, but also my crypto portfolio. So what is so some this basically sends us the signal and makes us realize how difficult the time of war is on everybody. My portfolio got butchered by 50%, and I realized the effects of war from such a far away different distance. I cannot imagine what the Ukrainians who are actually losing their lives, and there were several reports where they claim that as many as 60 and 100 Ukrainians have already died or injured during this uh, during this phenomenon, and a lot of their airports have been destroyed or have been left paralyzed and not functional. And as we all know that Ukraine is a landlocked country, so something like this really brings a country to its knees as far as By the way, uh, huh, yeah. yeah, you'd By like the to way, add. yeah, do you know Moscow index has fallen for about 30% yesterday morning, 30% in a one day. So Wow. yes, So we are still in basically, a very better shape. so the breaking news not everybody is covering is that Russia has not only invaded Ukraine but also destroyed its own economy whilst Yeah, doing so. it's quite, yeah, it can be quite heavily presumed. Yes, Yeah, Rakshit. Rakshit, you have something to Yeah, add. so basically, Russia has not only crippled its own economy, but every other economy in the world right now. The US Dow Jones is down by almost 3%. The Indian economy is down by 2,500 points. The Nifty is down by 5%. It's a total catastrophe everywhere. And not just that, the German people are the most scared because Nord Stream 2, the gas pipeline which exports gas from Russia to Germany, has been put on hold, which is shooting the gas prices in Germany. And gas is, as you all know, it's a very basic necessity. The whole economy runs on gas. You can't just stop it. So that is why Germany is like, "Wah, bachao mujhe." Exactly. And if I just want to add one more thing, the crude oil price has also touched $105. It's like after 7 years, the crude oil price has gone off $100. So काफी बड़ी प्रॉब्लम है अगर हम देखें लाइक काफी लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि क्रूड ऑयल का कितना ज्यादा इफेक्ट होता है बिकॉज लाइक आई वाज रीडिंग अ पर्टिकुलर आर्टिकल आई थिंक 1 or 2 year बैक इट वाज सेइंग कि क्रूड ऑयल $100 क्रॉस कर गया था around 2011 2012 around Libya invasion and that time तो इस वजह से यूपीए सेकंड गवर्नमेंट गिर गई बिकॉज मनमोहन कंट्रोल नहीं कर पाया इन्फ्लेशन एंड द राइजिंग कॉस्ट ऑफ बेसिकली बेसिक फूड मटेरियल्स एंड उससे कितना इफेक्ट हुआ सो लाइक ऑब्वियसली दिस इज नॉट ट्रू देयर आर अदर फैक्टर्स बट अगर इस फैक्टर को भी कंसिडर किया जा रहा है सो लाइक एक इंटरनेशनल उससे लाइक बटरफ्लाई इफेक्ट से एक कोई चीज किसी दूर देश में बहुत दूर हुई उससे कितना चेंज आ रहा है लाइक एकदम से एक दूसरे देश में लिटरली गवर्नमेंट चेंज हो रही है सो लाइक ये चीज ये दिखा रहा है कि लाइक क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा देन कॉस्ट बढ़ेगी एटसेट्रा एटसेट्रा so let's just move on from this topic and let's just continue like sidetrack zyada nahi hote in short let's just continue with our main topic कि like Right. what has been the timeline कि like क्या क्या कैसे हुआ है कब कब क्या हुआ है so like बहुत basically बताएं तो जो मेजर फर्स्ट रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई थी सैटेलाइट रिपोर्ट्स एंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वो अराउंड अप्रैल 2020 में आनी शुरू 2021 में आनी शुरू हुई थी कि रशिया हैज स्टार्टेड अमासिंग इट्स ट्रूप्स अमासिंग इट्स basically military material around the border of Ukraine. So after that, other reports also started coming
that Russia is conducting basically it drills with Belarus. As you know, Belarus has been controlled by Lukashenko, जो कि यूरोप का अभी तक एक लास्ट डिक्टेटर है. फिर उसके बाद टाइमलाइन वगैरह इंक्रीज होती गई कि लाइक आफ्टर 2020 बेसिकली आफ्टर अप्रैल वगैरह में फिर ये हुआ कि जब ऐसे पता चलने लगा लोगों को कि रशियन फोर्सेस ऐसे मास कर रही हैं बॉर्डर पे, फिर रशियन फोर्सेस वापस चली गई कुछ टाइम बाद. बट तब लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं करा, बट उन्होंने अपना मटेरियल लाइक जो भी उनके टैंक्स वगैरह जो भी मेन मटेरियल थे टैंक्स वगैरह वो उसको वहीं पर लीव करके वापस चले गए. फिर इसके बाद फिर से अराउंड नवंबर अक्टूबर में स्टार्ट होने लगा ये दोबारा से बिल्डअप, एंड देन दिसंबर में काफी ज्यादा नोटिस में आ गया. वेस्टर्न पावर्स ने नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग में काफी ज्यादा नोटिस देने लगा. देन जनवरी, एवरीवन रिमेंबर्ड क्या हो रहा था पूरे जनवरी में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी, इन्वेजन इज वेरी इमिनेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. देन फरवरी में तो लिटरली यही चल रहा था कि 21 फरवरी से पहले इन्वेजन हो जाएगा, 26 से पहले बीजिंग ओलंपिक के बाद इन्वेजन होगा. तो इस सब के बाद आज हमें पता चला है लाइक 24 फरवरी अकॉर्डिंग टू इंडिया टाइम इन्वेजन करा गया बाय रशिया इनटू यूक्रेन. सो दैट्स द टाइमलाइन. या जस्ट करण. So ये तो थोड़ी अपनी अभी वाली टाइमलाइन, part of the recent history, right? That happened quite in 2022 for the most part. But what a lot of people might not remember, might have forgotten, is the annexation or the illegal annexation of Crimea back in 2014. It led to a lot of harsh sanctions by the EU and US on Russia, and they had a lot of drastic effects on its economy. But it seems like Russia has planned to move forward with a more vast scale attack on the whole country of Ukraine, and the stance of India on all of this is quite curious for the most part, which I think we'll all like to add on to later. So Rakshit has something to say. Yeah, well, basically, the Crimea incident in 2014 instigated the EU and NATO and all the Western powers to give more attention to Russia. And Russia, being one of the 5 core members of the UNSC, is holding the presidential seat right now. So it can be said that Vladimir Putin had a very calculated risk, calculated plan to as to when to attack Ukraine, when to bring it back into the Russian Empire, what we are going to call it now as the New World Order, because bringing a whole country back into the pre-Cold War era is something which is very disturbing and at the same time very interesting also, because we will now see what changes it will bring into the world order, where we could see China rising up, giving a good opponents, being a good opponent to US. Now there are three countries, China, USA, and Russia at the same time. It is going to be either a slaughterhouse or a very diplomatic, peaceful relation. Yeah, काफी valid points, yes, Rakshit. And on this, I would like to add one more thing. So, yes, I agree with you, like up to a point ki, yes, I have found Putin as a reasonable person, as a very strategic tactician who thinks for far, like for in future, ki like वो next around 5-10 years का सोच के वर्क करता है. बट इस पॉइंट पे लाइक मैं पहले मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ये सब एकदम प्लान तरीके से पुतिन कर रहा है, बट आई एम हैविंग माय डाउट्स. लाइक अगर देखें तो रिसेंट विजिट इमरान खान के इनटू रशिया, तो लाइक इमरान खान जब सुबह गया था तब तक इन्वेजन अनाउंस नहीं हुआ था, एंड देन ही सेड कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू बी इन रशिया. लाइक अगेन इमरान खान बीइंग इमरान खान, व्हाट वी कैन से ऑन दैट. बट देन अगेन लाइक इन्वेजन के बाद लाइक रशिया का प्राइम प्रेसिडेंट है, लाइक रशिया की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बिजी है यूक्रेन को संभालने में, देखने में, लाइक तब वो एकदम से टाइम निकाल रहा है मीटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 23 इयर्स. एंड लाइक अगेन उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में इमरान खान डजंट मैटर मच. लाइक ये थोड़ा सा वो लगता है कि यार क्या ये सही में प्लान था, या कि लाइक बिकॉज ये ट्रिप तो पहले से ही प्लान थी अराउंड 1.5 वीक से, या कि लाइक इन्वेजन की डेट इन्होंने अभी ही रिसेंटली डिसाइड करी पुतिन ने, लाइक अराउंड फ्यू आवर्स बैक, जो कि हो सकता है. बिकॉज अगर हम देखें, अगर बहुत पहले से कुछ डिसाइडेड होता तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस इतनी सॉलिड है या इतनी एफिशिएंट है कि कुछ ना कुछ तो लीक हो जाता कि हाँ इस डेट को होना था, इस डेट को नहीं होना था. एंड आई हैव हर्ड द न्यूज की लाइक मतलब कल सुबह ही, मतलब कल रात को ही बोल दिया था बेसिकली पेंटागन ने कि हाँ नेक्स्ट 24 आवर्स में इन्वेजन हो सकता है.
So I don't know मतलब क्या correct है, but just putting it out there कि I have doubts on this point. Yeah, Rakshit. The Western intelligence is obviously very advanced and very intelligent about this, because as we could see, Biden was shrieking for the past month कि invasion अब होगा, invasion अब होगा, invasion अब होगा. He was basically instigating Russia to come invade. We want to boost our economy. The American economy runs on arms and ammunition. We want to boost it. Come and invade so that we can boost our economy. Huh, that's a good point. I think we will discuss on it further on. So let's just move on to the basically the history of this topic. Like, why is it happening? What has happened in the past? Like, what do we have to know about it? So first of all, I will just cover about the geographical part. Then I will ask Jaskaran to add more about it. Then we will move on from that. So geographically, if you guys are listening to this and if you seriously want to know something, like we just open your Google map and just go to the Ukraine, like just zoom out it a little bit so that you can clearly see Ukraine in a particular field. So अगर आप यूक्रेन में देखोगे तो यूक्रेन का जो सदर्न पार्ट है वो Also, ब्लैक सी you could just skip forward all of this geography part if you're not interested, and come to my section where I'll plug in my Twitter account. Just putting it out there, guys. आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग, अगर ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं समझोगे तो हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं समझ सकते. सो यस, स्टिल बीइंग एन अंडर हिस्ट्री अंडरग्रेड आई विल से ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेल टिम मार्शल. Okay, so like if you will look into the map of Ukraine, you will see Ukraine borders with Black Sea and काफी ज़्यादा border करता है Black Sea के लिए. अब now I will like give my theory. I will explain what I have heard and what I have read about why Black Sea is important for Russia. If you will see Russia basically has in the south a very big land border with Kazakhstan, Mongolia, China, etc., etc. But in its east, it is like it is basically matching with the Pacific Ocean. In its north, it is Arctic Ocean and etc. etc. बट अगर हम देखेंगे काइंड ऑफ रशिया का कहीं भी वार्म वाटर पोर्ट एक्सेस नहीं है. बाय दैट आई मीन कि उनके कोई ऐसा पोर्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 जहां से उनकी जो नेवी है ईयर अराउंड ट्रेवल कर सके पूरे वर्ल्ड में. एंड लाइक ये हमेशा से थ्योरी रही है अराउंड 16th सेंचुरी, एटलीस्ट 16th-17th सेंचुरी, कि अगर किसी नेशन को अर्थ पे सबसे पावरफुल पावर बननी है तो उसकी नेवी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है. एंड लाइक ऑब्वियसली यू कैन से 21st सेंचुरी में इट डजंट मैटर मच, बट इफ यू लुक अप टू चाइना इज मेकिंग इट्स नेवी ह्यूमंगस. लाइक अभी आई वाज रीडिंग कि चाइना के नेवी के पास जो शिप्स हैं वो इट इज नाउ लार्जर देन द नंबर ऑफ शिप्स यूएसए हैव. So like it's just trying to make sense of how important the navy is in the present sense. So तो अब रशिया के लिए क्या बचता है कि ब्लैक सी ही एक वाइबल ऑप्शन बचता है जहां पे वो हमेशा अपनी नेवी ले जाके ट्रेवल कर सकता है. बट देन ब्लैक सी में एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो इस्तांबुल से होके जाता है, इन शॉर्ट टर्की से होके जाता है. एंड अगर टर्की कभी ब्लॉक करना चाहे तो वो कर सकता है. बट देन अगेन ब्लैक सी में अगर उनका एक अच्छी अमाउंट ऑफ फोर्स होगी तो वो वहां से निकल सकता है. एंड वो वहां से निकल के मेडिटेरियन में जाएगा रशियन नेवी, एंड मेडिटेरियन से वो वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेवल कर सकती है. बट अगर उसको कहीं और से आना होगा तो उसको फॉर एग्जांपल अगर आर्कटिक ओशन से ऊपर से आना पड़ेगा, एक तो वहां पे बर्फ में जमा होता है तो लाइक काफी उन्हें ट्रेवल करना पड़ेगा. तो दिस जोग्राफिकल पार्ट सिग्निफाइज कि कितना इंपॉर्टेंट क्राइमियन पेनिनसुला है जो आप अपने मैप में देख सकते हो रशिया के लिए, बिकॉज इट गिव्स पावर, इट गिव्स रियल वेरी हार्ड पावर टू रशिया अगर उसके हाथ में क्राइमियन पेनिनसुला होता है ब्लैक सी में काइंड ऑफ रूल करने का. अब फिर अगर आप देखोगे तो मॉस्को जो एशिया एंड बेसिकली एशियन एंड यूरोप प्लेट है, जो जोग्राफिकल प्लेट है जो डिवाइड होती है वो यूराल माउंटेन से मेनली डिवाइड होती है. एंड यूराल माउंटेन से लेके उससे पहले जितनी भी मतलब पूरा लैंड है काइंड ऑफ मॉस्को से लेके आगे तक का यू विल फाइंड इट वो प्लेन लैंड है, मतलब उसमें कोई लैंड बॉर्डर्स नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे चाइना इंडिया का जो है लैंड वो उसमें इतने बड़े हिमालयाज हैं तो लाइक एक बहुत बड़ा बॉर्डर है. तो लाइक अगर चाइनीज आर्मी कभी मार्च करना चाहे नहीं कर सकती. एंड यही हमें पूरी हिस्ट्री में दिखा कि कभी नहीं कर पाई आज तक, क्योंकि इतना ज्यादा उन्हें पार करना पड़ता है, सारे बेसिकली ट्रेवल करना पड़ेगा हिमालयाज वगैरह. बट यही प्रॉब्लम जो रशियन एनालिस्ट सोचते हैं उनके अकॉर्डिंग पॉइंट वही आता है कि ये वाला जो पार्ट है ये काफी ज्यादा उनके लिए वल्नरेबल पार्ट है कि अगर कोई आर्मी बेसिकली वो करना चाहे, उनपे अटैक करना चाहे तो वो यूक्रेन के थ्रू आ सकते हैं मॉस्को. एंड ये पूरा फील्ड्स है, प्लेन फील्ड्स हैं जो बहुत इजीली कॉन्कर कर सकते. तो ये हमेशा से उनके लिए डर रहा था. तो जब बेलारूस,
लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया, मतलब पोलैंड वगैरह, ये सब जब सोवियत यूनियन का पार्ट थे, तो तब उनका पॉइंट इसमें यही रहता था कि ठीक है, ये हमारे लिए काइंड ऑफ एक बफर जोन हो गया कि लाइक यूक्रेन और ये वाला सारा पार्ट हमारे लिए बफर जोन है, जिससे हम मॉस्को एंड मेन जो रशियन सिटीज है उनको बचा सकते हैं। तो ये चीज जो थी, ये थिंकिंग जो थी 1991 के बाद भी हमेशा एक रशियन स्ट्रेटेजिक थॉट में रही कि हाँ, एक ऐसा भी मैटर हो सकता है। एंड हमें इसलिए यूक्रेन में जो भी होना चाहिए, यूक्रेन में जो भी पावर कंट्रोल करे यूक्रेन को, जो भी पॉलिटिक्स, मतलब यूक्रेन का प्रेसिडेंट वगैरह जो भी हो, काइंड ऑफ रशिया लीनिंग हो, कि हमारे सपोर्ट में हो एंड ज्यादा वेस्ट में ना जाए। तो अब अगेन वाई इज इट हैपनिंग में फिर वही बात आ जाती है कि लाइक अब ये तो जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब कि इसके अलावा और क्या क्या जोग्राफिकल मतलब इसमें पॉइंट्स वगैरह हमें दिखते हैं, हमें मतलब इसमें ये दिखता है कि लाइक यूक्रेन, इफ वी हैव टू टॉक अबाउट इट, तो लाइक यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है, बिकॉज ऑफ बेसिकली रशिया भी पूरे यूरोप में नहीं आता है। तो इससे काफी सिग्निफिकेंस दिखती है कि किस टाइप से है। अब यूक्रेन में अगर आप देखोगे तो यूक्रेन में एक बीच में रिवर है, डिनाइपर रिवर करके, जो कि यूक्रेनियन पेनिनसुला को काफी ज्यादा फर्टाइल बनाती है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यस, जस्ट करें। Yeah. Hi. Yeah. So I just wanted to add to all of this that ever since Russia broke up in 1991, it has always been trying to push its new neighbors or the countries that were earlier part of it towards itself. But it was never really all that powerful before Putin because it had quite recently crumbled and its resources were not up to the mark to handle all of those forces and maintain a communist regime in all of those countries. So a lot of them were pushed to the Western fronts, especially bringing the example of Germany, because we have an analyst for that. The East Germany and the West Germany scenario, where the East Germany and West were finally united after the Berlin Wall was broken. This basically signified a new era in the East German context because they were pushed towards development, which they coincided with the Western nations and the Western way of thinking. So the what I would like to raise is the fact that I think on Putin's so-called bucket list, an annexation or something big or something huge had to be there to leave a so-called legacy. But the economic sanctions that led to it and the economic sanctions that are going to be present in future, how do they compare to the profits that are going to arise with its navy having access to warm water all year round for for its navy and for all of the trade purposes that Shivansh mentioned? How do they compare? That's also an interesting point of view to for us to analyze. Raksha would like to add. What, in my opinion, is that the sanctions which are going to be put or are put on Russia as of now have been kind of blatant. Like they haven't had any effect on Russia as much as they should have had, because Russia has made itself so self-sufficient that it's practically leaning out that I don't give a shit whatever sanctions you're going to put. I'm going to do what I will, what I want to. Putin has declared a very bold statement that I want this place, it was my part and I'm going to take it back. Now, if you want to come and fight with me, NATO is kind of बौखलाया हुआ है इस वक्त कि हमें क्या करना चाहिए, because we cannot, यूक्रेन को हम पार्ट नहीं ले अंदर कर सकते अपने, because ongoing border conflict है, एंड अगर हम लेंगे तो हमें रशिया के साथ फाइट करना पड़ेगा, बट यूरोप में कोई वॉर ऐसा चाहता नहीं है. सो ऑन टू शिवांश भैया. So on the part of sanction, I would say I disagree on that point कि रशिया पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है. I feel कि yes, डेफिनेटली रशिया पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, बिकॉज अगर हम इकोनॉमिक नंबर्स ही देखें तो रशिया की इकोनॉमी हैज गॉन डाउन, रूबेल हैज गॉन डाउन वेरी मच, लाइक उसकी वैल्यू अराउंड आई थिंक 50% डॉलर के कंपैरिजन में डाउन गई है. तो लाइक डेफिनेटली इफेक्ट तो हमें दिखा है. एंड जो इस जस्ट यू आर ऑन म्यूट इफ यू आर सेइंग समथिंग. Yeah, even in terms of its self-sufficiency, it's still majorly an oil and natural gas-based economy. If we are Yeah, looking at its exactly. economy, and its economy fluctuates with the price of oil, so we cannot really say it's all that self-sufficient. But yeah, in terms of the fact that a lot of the European Union countries import natural gas from Russia, Yes. makes it a very important location geographically connected to Europe. And
if I want to add one or more thing, तो like 50% of Russia's whole budget comes from its sale in oil and gas. तो अगर ये सोचो कि बाकी कंट्रीज उसका ऑयल एंड गैस खरीदना ही बंद कर दे, तो like उसकी तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, लाइक तो सेल्फ सफिशिएंसी का पॉइंट नहीं आता। आई एम गेटिंग रक्षित क्या पॉइंट ऐड करना चाह रहा है, वो ये कहना चाहता है कि वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है रशिया, वो उतना ही सेल कर रहा है, एंड कि उसके पास बेसिक मटेरियल्स उसके अंदर ही है। इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट रक्षित इज ट्राइंग टू से, लाइक यस दैट इज डेफिनेटली अ वैलिड पॉइंट, बट देन अगेन ये जो बाकी उसके कॉन्ट्रैक्शंस है, लाइक जैसे पॉइंट उठता था कि अगर अभी रिसेंट टाइम्स में भी कि यूएस अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा देता है, तो रशिया चाइना को तो सील करता ही रहेगा ऑयल एंड गैस। तो यस डेफिनेटली वो वर्कआउट हो सकता है, बट देन अगेन चाइना के अलावा कोई और उसके पास बायर नहीं बचेगा, एंड अगर चाइना अकेला उसका बायर होगा, तो चाइना उससे कहेगा कि भाई मैं तो लाइक तेरा ऑयल खरीद रहा हूँ, तो मेरे को तो काफी सस्ते में थे। तो लाइक वो तो ऑब्वियसली, अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस चल रहा है $100, वो कहेगा $80-70 में, देन रशिया को देना पड़ेगा, बिकॉज वो मजबूर हो जाएगा। तो वही पॉइंट आ जाता है। तो लाइक फिर पॉइंट वही आ जाता है कि मतलब होगा क्या, लाइक ऐसे सेल्फ सफिशिएंसी वाले पॉइंट पे। देन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि व्हाई इज इट हैपनिंग, तो अब इसमें फिर पॉइंट वही आ जाता है कि लाइक ठीक है, जब 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेकआउट हुआ, तो जब 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेकआउट हुआ, अब उसके बाद ऑब्वियसली वी नो कि 15 अदर नेशंस बन गए, 15 स्टेट्स में वो डिवाइड हुआ। अब उसमें फिर पॉइंट उसी अकॉर्डिंग राइज होता है कि भाई 15 नेशंस में फिर मतलब हुआ क्या क्या था, लाइक कि किसने क्या एक्सेप्ट करा, किसने नहीं कहा। तो अगर हम पुतिन की आइडियोलॉजी देखें, पुतिन की थियोलॉजी देखें, तो लाइक पुतिन ने ये कई बार टर्म करा है, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार अपनी स्पीच में कहा है कि ब्रेकिंग अप ऑफ सोवियत यूनियन वाज द ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रॉफी ऑफ 20th सेंचुरी। एंड लाइक अगर सोचे तो लाइक वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ है भाई, तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे हैं, हॉलोकॉस्ट हुआ है, एंड तो कह रहे हैं कि एक देश टूट गया तो वो बिगेस्ट कैटास्ट्रॉफी है। सो दैट्स फनी ऑन पुतिन्स पार्ट। पुतिन इज अ फनी मैन, व्हाट वी कैन से। तो अब उसमें फिर पॉइंट वही आ जाता है कि ये चीज दिखाता है कि पुतिन में एक काइंड ऑफ प्री सोवियत यूनियन आइडियोलॉजी रही है हमेशा से, कि वो हमेशा से चाहा है कि वो एक एम्पायर रिक्रिएट करें। तो इसमें मेरा पर्सनल जो आई हैव एनालाइज्ड की जितना मेरे को समझ आया कि ऐसे जो पुतिन का बाय ग्रोइंग ईयर्स उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बिकॉज जब ब्रेकअप हुआ था काइंड ऑफ सोवियत यूनियन का, तो लाइक सोवियत यूनियन एकदम बिल्कुल खत्म होने के कगार पे था, उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन थी, उसकी मिलिट्री एकदम खराब थी। तो जैसे जैसे पुतिन 1999 में आया, फिर से इकोनॉमी रीबिल्ड करी, बिकॉज प्राइस बढ़ने लगे थे ऑयल के काफी ज्यादा, गैस के, तो उसके साथ ही उसका कॉन्फिडेंस वगैरह राइज होने लगा। या जस्ट करें। So I would like to, yeah, I'd agree to your point that you're trying to make, that Russia has been quite desperate in recent times to gain the uh, so-called geographical locations that it has lost in terms of and making itself a superpower that it once was during the Cold Wars. And Russia had to be quite desperate, and Putin had to be quite desperate in terms of attacking, because in spite of my extremely strongly worded tweet to not attack Ukraine, Russia and Putin completely ignored that tweet and still went on to invade Ukraine without my permission. So I just say that it had to be quite a quick-witted decision, maybe not completely planned. Also mentioning the 23rd, I think 23 years um, time that had passed, after which Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, went on to meet uh, Russian President Putin. Uh, in the midst of an attack, had to be quite an unplanned event, because it was at least a big event on Pakistan's part, and having someone you have to host during a invasion seems completely unplanned and a very rash decision. But I'm a little khapa या from I'm आई a little एग्री विद योर khapa. पॉइंट, Yeah. कितना अनप्रैक्टिकल हो जाता है, लाइक मतलब इतने सारे सोल्जर्स वगैरह के लिए भी खाना प्रिपेयर करना है, फिर देन इमरान खान के लिए भी, मतलब ओके। या रक्षित। मतलब इमरान खान ने Right. एक्चुअली यही बात करी कि बिन बुलाए बाराती, वहां पे अच्छा खासा यूक्रेन का बैंड बज रहा है और इसको अपनी बारात लेके आनी है साथ में। Hmm. हाँ, बेचारे Right. इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी घट, मतलब इतना कवरेज नहीं मिलेगी बेचारे को, सब लोग बात कर रहे हैं यूक्रेन यूक्रेन, इमरान खान ऐसे पुतिन के साथ खड़ा है। लाइक सीरियसली अगर सोचें, सब पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर ब्लेम कर रहा है पुतिन को, एंड इन्वेजन के अगले दिन ही फोटो आ रही है पुतिन के इमरान खान के साथ। दे विल से वाओ, पाकिस्तान को क्या हुआ, मतलब आई गेस काफी सही हो रहा है। हम इस पे वरी कर रहे थे कि पाकिस्तान क्लोज जा रहा है रशिया के, अब वी शुड वरी कि अच्छा हो रहा है।
नहीं, I think ये तो नहीं ज्यादा ही मतलब close चला आप गया. irony If you think about it. आप आयरनी देखिए इधर. पहले in the 1960s 1970s USA was a very close ally with Pakistan. Now Pakistan is going to Russia कि भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं आप, इन्वेजन कैसे चल रही है. अरे डू यू नो अ फन फैक्ट? सो मतलब ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बेकार है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अभी श्रीलंका को पाकिस्तान ने $200 मिलियन का लोन दिया, लाइक $200 किसने मिलियन किसको? का, क्योंकि श्रीलंका की economy बुरी चल रही है. श्रीलंका, हम्म. सोचो. एंड लाइक उसे अभी खुद सऊदी अरेबिया से लोन लेना पड़ा अराउंड कुछ $1 बिलियन का. तो काफी आयरनी. यस रक्षित. एंड आई मीन लाइक श्रीलंका ने तो चलो लोन दिया. इलन मस्क, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसकी टोटल नेटवर्थ पाकिस्तान से ज्यादा की है. इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान की. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इलॉन मस्क हियर. काफी व्यूज और काफी गालियां वगैरह निकल जाएंगी किसी के मुंह से. तो लेट्स स्किप दैट फॉर द सेकंड पॉडकास्ट. गाइस, इलॉन मस्क के लिए सुनना, अगर इलॉन मस्क के बारे में अच्छी अच्छी एंड ऐसे डीप बातें सुननी हो तो प्लीज listen to this podcast completely and donate to us. The link will be there definitely. Okay, Okay, and so now moving coming back on. to Russia and Ukraine. Yeah, Rakshit. Why is Russia such against Ukraine as of now? It is basically due to NATO. Since 2014, since the illegitimate conqueration by Russia of Crimea, the Crimea region since 2014, Ukraine has been always supportive of the West. It has been always inclined towards the West, that it wants to join NATO, it wants to join EU, so that NATO will provide the required protection, the required economy, the required loans, and etc. to Ukraine to sustain itself. But why has been Russia against it? Because of the imminent threat that NATO will pose. Because obviously, जैसा शिवांश ने आपको बताया, यूक्रेन इज जस्ट नेक्स्ट टू रशिया. एकदम स्विफ्ट अटैक जाएगा अगर जाएगा तो. अब NATO has been expanding since 2007, since 1997, pardon me, since 1997, when it clearly said as an informal promise when the USSR broke that NATO will not expand towards East or Eastern nations. When, well, of course, कोई भी country अपना promise नहीं रखती कभी भी. तो नेटो ने 1997 में कुछ 5-7 नेशंस को अपने अंदर इंक्लूड किया. उसके बाद 2004 में फिर से करा, फिर 2008 में फिर से करा. तो ये जो एक्सपेंशन था ये पुतिन को एकदम खड़क गया कि यार ये एक्सपैंड करते जा रहे हैं और रशिया एकदम इमिनेंट थ्रेट के अंदर आता जा रहा है. तो इसके लिए इनको रोकना जरूरी है. Yeah, exactly. So guys, I would just like to highlight one more important thing. ओके, सो मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ. तो ये जस्ट मेरे को एक एबीवीपी वाले मेंबर ने मैसेज फॉरवर्ड करा. इसमें ये लिखा है कि लगभग एक पंजाब कौन सा है, मेंबर? पंजाब KVPP? या एबीवीपी बेसिकली पॉलिटिकल विंग है, स्टूडेंट अच्छा, पॉलिटिकल विंग है ABVP. बीजेपी हाँ, का. okay. You must have heard about BJP. It used to be a political party, a democratic political party. Now it's morphing itself into a kind of, यार कह ही देते हैं, मतलब वो कौन ही रोकेगा, kind of a We all. autocratic state. Yes, we all are dissenters here. I hope Rakshit is also one of us. No, Okay, I am in ABVP and ABVP is not directly under BJP. It has BJP support, but it's not directly under ABVP. Okay, so now Hey, Rakshit is going to do. I support Yeah, Rakshit just on this point completely, that BJP and ABVP are not directly related, and their ideology should not be mismatched and misappropriated. Sorry to say Exactly. much, but yeah, So making fun now of Rakshit somebody's will say, ideologies is not a no, is not a now just wait for a minute. I have a question for Rakshit. Rakshit, please Mhm. tell me with which organization ABVP is affiliated with? It is not affiliated with any organization as of now. It has the support of BJP as its backbone, but is not affiliated with it. Whereas Is the student BJP organization, okay. Is BJP its backbone or is RSS is its backbone? that is a very conflicting fact / statement right there. It There is can be You nothing know that, considered right? both or neither. Rakshit knows, and Rakshit is trying to basically not highlight the fact that ABVP is much more associated with RSS, so we can understand their I can neither restriction. confirm that nor deny that. Yeah, definitely. So coming back to the point, Guys, so guys, ABVP, tune in next week to find out what Rakshit actually had to say behind the scenes. yes, for getting the exclusive behind the scene recordings, pay to us.
I accept Okay, F coming back these to the days. topic, Ukraine versus Russia. Let's come Yeah, back to yeah. the topic. Before that one point, तो ABVP के लास्ट ईयर का प्रेसिडेंट हमारे कॉलेज में just send me this message. Please check your WhatsApp. In it is written पंचांग के बारे में। तो पंचांग एक बेसिकली रिलीजियस कैलेंडर होता है जो इंडिया में काफी हिंदू हाउस होल्ड्स में यूज होता है। तो उसमें एक लाइन लिखी है, लगभग 26 फरवरी 2022 के बाद 7 अप्रैल 2022 तक शनि मंगल का मकर राशि में योग यूरोपियन देशों की नीति विश्वव्यापी अशांति किंवा अघोषित युद्ध का वातावरण बन सकती है। गुरु शुक्र एवं शनि मंगल को स्थिति भी है, अतः मुस्लिम राष्ट्र नायकों की नीति एवं भारत के साथ व्यवहार में सुधार संभव है। सो गाइस, हिंदू रिलीजियस पंचांग जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे भी कमेंट करता है एंड बताता है कि कौन सी डेट से कब तक कौन से देश के बीच में लड़ाई होगी, कब नहीं होगी। तो काफी अज्यूमिंग। तो अब उसके साथ जो टेक्स्ट लिखा गया कि अपनी रक्षा नीति और विदेश नीति में अरबों का खर्चा करने वाले देश एक बार भारत का मात्र 90 रुपए में आने वाला पंचांग पढ़ लेते तो अपना भविष्य जान लेते। यह सनातन और पंचांग की ताकत है। गाइस प्लीज कमेंट्स। देखो, say मैं I am an extremely true. atheist, so I no comments. We are not giving we are not giving you a chance. Jaskaran, please comments. Like I don't have anything to say. तो मेरे को कहना था, मैंने कह दिया, बस पढ़ दिया। I think those who want to believe it should believe it. I'm nobody to stop them. And those who don't want to believe it or think otherwise, they shouldn't believe it. But in terms of this, coming back to Putin, Right. yeah. But do you think कि एक हिंदू रिलीजियस पंचांग इतना जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे भी कमेंट कर रहा है एंड CIA को अपनी अरबों डॉलर्स की जो खर्चा होता है उस पे वो बंद करके पंचांग खरीद लेना चाहिए, जिससे उसे पता चल जाए कि आगे क्या होना चाहिए? डू यू सपोर्ट दिस नहीं, व्यू, शायद जसकरण जग्गी? शायद पुतिन ने पंचांग खरीद के पढ़ा, तभी ये अटैक हुआ है। यस, अब हम समझे पुतिन ने अटैक कभी क्यों करा। गाइस, मिस्ट्री सॉल्व्ड। अभी उसका लक अच्छा चल रहा था बेसिकली। तो एक सब टॉपिक है इसी में कि think about the other wars that are currently happening, right? There are so many wars that were happening before this Russian-Ukrainian conflict. How do those differ with something that's happening right now? Because let's take an example of Africa, let's say, right? There are a lot of internal conflicts, a lot of wars in Sudan, for example, and not a lot of that is covered in the news as much as the Russian-Ukrainian conflict is, or it's not given all that much importance in our stock market, in our portfolios, when we are considering what to buy, what to sell, or the international trade relations. So what differs in that war compared to this war is something that we all need to realize, and why this could be a lot more frictionful, a lot more harmful for the whole world compared to all of those wars which are a little more, let's say, secluded. Yeah, definitely a valid point. And इसमें I will just say yes, अफगानिस्तान में भी अभी वॉर खत्म हुई, उसका भी इतना इफेक्ट नहीं हुआ। लाइक ऑब्वियसली 1 or 2 days के लिए हुआ था, बट इतना ड्रॉ डाउन नहीं हुआ जो हमें स्टॉक मार्केट में दिखा। एंड लाइक गाइस, यू मस्ट बी वंडरिंग why are we emphasizing so much on the stock market besides our money is in the stock market? Like I personally feel stock market is something जो आपको आने वाले टाइम का काइंड ऑफ इंडिकेशन देता है। तो लाइक जो मूड बताता है एक पर्टिकुलर देश के लोगों का, बिकॉज स्टॉक मार्केट में एक रिटेलर से लेके एक इंस्टीट्यूशनल से लेके गवर्नमेंट से लेके सब लोग हैं। तो लाइक वो काइंड ऑफ मूड इंडिकेट कर रहा है। एंड माय व्यू इज कि लाइक जैसे इथियोपिया, सूडान एंड बाकी देशों में, यमन में जो वॉर चल रही है, यमन में तो सिविल वॉर पता नहीं कितने टाइम से चल रही है, लेट्स जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट। तो लाइक मतलब जो इतने टाइम से चल रही है उस पर इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि नेचुरल रिसोर्स फुल कंट्री है रशिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, रशिया इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री। एंड अब इसमें अगर हम देखें तो लाइक रशिया एक ऐसा देश है जो मतलब ठीक है जिसकी इकोनॉमी चाहे यूनाइटेड किंगडम के हाफ हो, बट आफ्टर यूएस आज के टाइम पे भी इफ वी कंपेयर चाइना, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स विल से रशिया हैज द बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट आर्मी, रशिया हैज द सेकंड पावरफुल आर्मी। एंड रशिया को जो डिफरेंट बनाता है, आई बिलीव it is its willingness to use that power, like it is its willingness to use that army, because देखें like जब यूएस हर जगह से विड्रॉल कर रहा है एंड रशिया हर जगह आके प्रोएक्टिवली एंगेज कर रहा है,
इफ वी सीक लाइक सीरिया में असद की मदद कर रहा है रशिया, वो प्रोएक्टिवली अपने वेपन्स सब लोग लाइक अपने ट्रूप्स वगैरह सेंड कर रहा है। बैक टू द रक्षित पॉइंट जो रक्षित शुरू में डिस्कस कर रहा था कि नेटो का इन्फ्लुएंस जो रशिया इतना चिल्ला रहा है कि भाई नेटो हमें आके मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सो गाइस आई पर्सनली थिंक कि मतलब लाइक मेरा भी कुछ दिनों पहले तक ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ भाई ठीक है, रशिया के साथ थोड़ा गलत हो रहा है कि लाइक आप इतने पास तक एक्सपेंड कर रहे हो, अपने वेपन्स उसके बॉर्डर तक रख रहे हो, एंड रशिया बीइंग अ सुपर पावर जो एक टाइम पे डिजर्व करती थी रिस्पेक्ट, एंड जरूर हम उसे देनी चाहिए, तो ये लाइक ये काइंड ऑफ अनफेयर हो रहा है। बट नाउ आई बिलीव कि ठीक है यार, आपके साथ एक लिमिट तक अनफेयर हो सकता था कि वो आप पे अटैक कर सकते थे, बट ये इसको तो जस्टिफाई नहीं कर सकता था, करता ना कि लाइक वो कि भाई मुझ पे कोई आके अटैक कर सकता है, क्योंकि मैंने उससे पहले ही अटैक करके पूरा देश कब्जे में कर लिया, जिसने मुझ पे अटैक करा भी नहीं और जिसमें हिम्मत भी नहीं अटैक करने की। सो लाइक मैं बस कब्जा कर रहा हूँ, तो लाइक काइंड ऑफ ये बहुत ब्रेक डाउन कर जाता है आर्ग्यूमेंट, ये Sympathy कहना कि can भाई take you only so far, right? Sympathy can only take you हाँ so ऐसा, far. हाँ मतलब इंडिया के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स वगैरह में भी जो बाकी स्टूडेंट से भी मैं बात कर रहा हूँ, तो लाइक इंडिया में मेरे को ऐसा व्यू देखने को मिला, लाइक ऑब्वियसली मैंने कुछ ऐसे सर्वे नहीं किया है, बस मेरे अराउंड के लोगों में कि लाइक लोग आर सेइंग कि नेटो की गलती थी, नेटो एक्सपेंड कर रहा था, रशिया तो एक वो है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड रशिया ही यहाँ पे एग्रेशन कर रहा है। लाइक यूक्रेन का कोई एग्रेशन था नहीं, अगर देखें 3-4 दिन पहले जब रशिया ने अपनी स्पीच, पुतिन ने अपनी पूरी इमोशनल स्पीच देते हुए, गुस्से वाली स्पीच देते हुए रिकॉग्नाइज करा था डॉनबास रीजन को। बाय द वे गाइस, डॉनबास रीजन ईस्टर्न यूक्रेन में रीजन है जहाँ पे मतलब काइंड ऑफ रिबेलियन काइंड ऑफ छोटी सी सिविल वॉर चल रही थी सिंस 2014, जो रिबेल्स थे उनको सपोर्ट कर रहा था रशिया डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ। तो वहां पे अभी उसने 3-4 दिन पहले उसे रिकॉग्नाइज करा था, एंड डीपीआर एंड एलपीआर जो है लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड डोनेट्स पीपल रिपब्लिक को एज ए रिपब्लिक रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो अगर देखें कि लाइक उसमें जो उनका पॉइंट था कि भाई हमने रिकॉग्नाइज वगैरह कर लिया कि लाइक बिकॉज ये रशियन स्पीकिंग पीपल है, इनके साथ गलत हो रहा है, ये वो, अब इन्हें एज अ सेपरेट स्टेट होना चाहिए वो। बट देन अगेन ठीक है, तुम्हारा एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता था कि ठीक है, तुम्हें एक काइंड ऑफ टेरिटरी जो तुम ऑलरेडी हेल्ड करते हो उसे रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, बट देन उसके बाद भी तुम अटैक कर रहे हो, इमिनेंट मतलब सब कुछ आ रहे हो, आगे आ रहे हो, मतलब देन डिस्ट्रॉय कर रहे हो एक पूरे नेशन को, तो इट इज हार्ड टू मेक सेंस। या रक्षित? Okay, so this news has just come in that Russia has now officially captured the Ukrainian Chernobyl power plant, which was the nuclear power plant जहाँ पे हादसा हुआ था कुछ साल पहले, and also the Hostomel airfield, which is one of the most important airfields besides Kiev in Ukraine. So अब देखा जा सकता है कि I think कल सुबह तक रशिया पूरा का पूरा यूक्रेन कैप्चर कर लेगा, अगर अभी तक नहीं करा। लाइक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, बट अगर अभी तक नहीं करा अनऑफिशियली भी, तो कल सुबह तक तो कर ही लेगा। एंड एज कमिंग बैक टू नेटोज पॉइंट, नोबडी इन यूरोप वांट्स अ वॉर एक्सेप्ट फॉर आई थिंक यूके एंड फ्रांस, बिकॉज वही दोनों हैं जो उछल उछल के आगे आ रहे हैं कि हमें तो लड़ना है, हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, फ्रांस हैज आई डोंट, डिक्लेयर्ड एंड मतलब ऐसी भी तो बात नहीं है ना, वो अपने ट्रूप्स वगैरह तो भेज नहीं रहे। no, because what I saw on BBC about half an hour of 50 minutes ago, that France has now declared a full-on support to Ukraine, including its heavy artillery, troops, and fighter jets. And Oh, UK तो पहले से ही बक रहा था. And but yes. all in all, I think NATO powers, NATO nations, बाकी के withdraw कर जाएंगे because nobody in Europe wants a war after World War II. Because if NATO indulges in a war with Russia, China will back Russia. Although China has a very contradicting statement by now because it has only recognized an invasion, even though it is not clearly stating that it has recognized the invasion. China is still viewing the situation from afar. And Mr. Modi has recent, like अभी कुछ एक घंटा पहले ही मिस्टर मोदी की भी न्यूज आई कि उन्होंने यूक्रेनियन पावर से बात Modi करी है, ji. यूक्रेनियन. I think you meant Modi ji. No, I specified Mr. Modi. So Mr. I don't Modi need ji to. then. Okay, our Prime Minister, Do you want to be Honorable thrown out Prime from the Minister. list? Sorry, By yeah, our your Honorable Prime Minister, as Mr. Jaskaran Singh सेकंड हो Jaggi गया has. हमारा, बेचारे को हम अरे जोक में बोलने ऑफेंड, दे रहे। अरे नहीं नहीं, मैं सॉरी ऑफेंड रक्षित। तब होऊंगा जब रशिया यूक्रेन को पूरा कैप्चर नहीं कर पाएगा. आई ऑनेस्टली सपोर्ट रशिया इन Oh, दिस specific war because I have been a fan of Vladimir Putin and his work since I was born, and I mean, like it's something that Beautiful guy. Russia is making. Russia has the most bold statements in the world. It does not give a shit what anybody else thinks.
whereas Joe Biden is a scaredy cat. France till now was a puny ass coward. Now it has still just said कि हम भेजेंगे, but भेजेगा नहीं भेजेगा वो भी पता नहीं है. जर्मनी तो भेजेगा ही नहीं क्योंकि उसकी तो गैस पाइपलाइन ही काट देगा, नहीं तो रशिया. जर्मनी क्रिपल हो जाएगा पूरा. I love Yeah, I how he completely has agree said. with this. Putin is, Just one point, okay, sorry. add on. I love how he has said, love Putin's work. And like मतलब मेरे को सारी बातें याद आ गई. Okay, सीरिया में Murders, ये क्या जो media, क्या media murders. That guy who's being a still in murderer prison. and उसके opponents वगैरह मतलब amazing. You are meant to be for ABVP, Rakshit. Good going. Great. Yes, just correct. So I was just adding to that. Yeah, Putin has been a great inspiration to especially to me. It's been such a special relationship that I have his picture, his naked picture on a horse in my room, a big naked picture of him. And you guys must have seen it. I'm talking to the audience member, the one member who's actually listening. I don't know why you're still here, but yeah, I still have his picture on my wall to give me motivation that anything is possible. That guy started out from Only nothing, motivation. and he's the best now. I don't want to go into this कि हिटलर का आइडिया फिर मतलब डार्विन वाला था. Let's not talk Demon. about it. Let's come back to Ukraine. And stereotype हमें भूलना नहीं चाहिए. Jews control all the levers of powers. Yeah, absolutely. I support the Jews in every possible respect. Israel is right. Palestine is, well, I don't even know if that's even a country. Guys, episode 5, Israel Palestine. Guys, tune in. Okay, just regarding Israel Palestine, Israel just killed 3 Syrian soldiers. Like हम लोग यहाँ पे यूक्रेन रशिया डिस्कस कर रहे हैं. यूक्रेन इतना बेचारा मर रहा है वहां पे, जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है. एंड Israel just like it bombed Damascus region of Syria while nobody was looking. 3 Syrian soldiers were killed in an Israeli rocket attack. The most Israeli way possible. I swear. When nobody else was looking. Yeah. So It's basically equivalent to buying your stocks when there's a war going on. Oh, there's a war. Such a great opportunity to buy new stocks. Yeah, but first you have to sell them ताकि थोड़ा sell पे भी profit आए. Sell profit की Why तो would I sell red capital stocks? तो है ही नहीं. Guys, dip buy कर करके dip में चला गया हूँ. वो डीपी साला ये डीपी नहीं जाता. ये जल्दी खत्म नहीं होता. So do you know like Israel has quite a good relationship with both Russia and Ukraine. Like Netanyahu in his prime ministership visited Russia 30 times, 30. And like रशिया का इतना मतलब इतनी काइंड ऑफ इजराइल इतना अगेंस्ट में जाकर नहीं बोल रहा रशियन इन्वेजन का, बिकॉज रशिया कंट्रोल सीरिया का एयर स्पेस, जैसा आई टोल्ड यू. एंड रशिया इजराइल यूजेस दैट एयर स्पेस to bomb Iranian targets. So it needs that airspace, and then it again needs that airspace and that connectivity to target in Syria. Like Israel भी काफी बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है by being Israel, like Israel काफी for and against में आ जाता है. इस केस में वो काफी बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है. So Would you say stand is a little more coinciding with the Indian stand on this issue? Because India had quite a neutral stand on this. I think it's the right time. Just a second, Rakshit. I think it's the right time now to discuss about the impact on India and like what has been and the India's stance on this topic. Yes, Rakshit. Well, India has always been a non-allied member even in the Cold War era. Like World Wars में तो हमें करना ही पड़ा because British were controlling us. But Cold War era was a very significant time for the whole world. And if in that time India can remain a non-aligned member, then even today it can do so, but it may not do so because we have long-standing ties with Russia, and since the past 5 or 7 years, we also have very good relations with the USA. So we'll have to pick a side, but we'll have to be very diplomatically correct so that neither of our relationships get harmed and adversely affect our economy as well as democracy. Yes, Shivansh. You know, I personally believe on this कि like अगर ये war मतलब जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे जॉर्जिया में तुम सबको पता होगा 5 day के अराउंड वॉर करी थी रशिया ने एंड ऐसे मार दी थी जॉर्जिया की. तो मतलब अगर ये वॉर भी लाइक फॉर एग्जांपल 1 वीक से कम की रहती है या 14 डेज से कम की रहती है, तो आई थिंक इंडिया काफी इजीली मेंटेन कर पाएगा अपना काइंड ऑफ मिडल पाथ. बट अगर ये वॉर काइंड ऑफ अफगानिस्तान टाइप में कन्वर्ट हो जाती है जहां पे रशिया ऑक्यूपेशन करने की कोशिश करता है यूक्रेन की, तो आई थिंक
इंडिया को कोई ना कोई एक लाइक साइड चूज करनी पड़ेगी, बिकॉज इतने लंबे टाइम के लिए, बिकॉज इंडिया इस वक्त एक पेकुलर पोजीशन में, लाइक आई एग्री विद यू, पास्ट में हम नॉन अलाइंड पोजीशन बहुत इजीली ले सके थे, बट अभी उसको फिर एक ऐसी पोजीशन लेनी पड़ेगी जहां पे वो क्लियर करना पड़े कि हाँ हम यूएस के ब्लॉक में है या इस ब्लॉक में, बिकॉज देन अगेन व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज पहले ये था कि हमें हमारी मतलब चाइना के साथ काइंड ऑफ हमारा ज्यादा कंटेंशन नहीं था, हमारी जो काइंड ऑफ वॉर थी वो पाकिस्तान के साथ थी जिसको हम इजिली कंटेन कर पा रहे थे, बट देन अगेन हमें चाइना को कंटेन करने के लिए या तो रशिया ब्लॉक में होना होगा या यूएस ब्लॉक में होना होगा, एंड वो डिसीजन हमें लेना पड़ेगा अगर ये वॉर आगे बढ़ती है। दिस इज माई पर्सनल व्यू, लाइक जो मेरे को समझ आया। Yeah, I think in a Because long-term war just a minute. basis, we'll also have to analyze the Chinese situation, because if they are inclined Yeah, to that's what close I'm coming to to. Russia, Because then it's going to be extremely hard for us to ally or maintain a neutral position, because China has not been, well, to put it extremely kindly, has not been kind to us, right? And to maintain a neutral position when one of your worst enemies has sided with one of the nations is a hard thing to do, especially in times like these when all of these relations are extremely complex and sensitive. yeah, Yeah, coming to exactly. this Chinese relationships with India and the rest of the world, China has yet not taken an affirmative stand. And I think, in my personal opinion, it would be best if we take a stand right now rather than delay it, because once China takes Russia's side or US side, it will be like pretty straightforward for us which side we have to take, and it might harm our long-term relations with the other bloc. So in my opinion, it is best to take a stand right now than delay it for the later and suffer the consequences in the long term. Yeah, but it could Yes. also backfire on us uh, straight away, because if you consider taking a position right now, right, then maintaining a neutral position for India is beneficial, as you mentioned in a lot of detail, right, and maintaining that maintaining that decorum, maintaining that neutrality for us for as long as we can provide us with a little benefit, but that also depends on the duration of the war. So if Russia invades and completely captures Ukraine The whole in a very block short thing amount of actually, time. yeah, the हाँ whole मतलब block thing अगेन, actually plays on the duration of the war, because as far as I'm Absolutely. concerned, Russia will be done conquering Ukraine by the morning, and then it'll just boast about how it did and all, and if NATO was to wage war on Russia, that it'll crush NATO very easily, and etc. 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 Because Vladimir Putin, if he says so, that he might do it, he might just conquer whole of Europe without even like properly instigating USA as it instigated Russia to actually invade. ओके वेल लेट्स नॉट गेट इनटू इट, वो तो काफी ही मतलब हाइपोथेटिकल पार्ट में चला जाएगा थोड़ा सा कि क्या क्या हो सकता है, बट देन अगेन इंडिया पॉइंट पर ही आए तो आई ऑल्सो फील कि मतलब जैसे इंडिया का लाइक अगेन वी हैव टू सी टू द फैक्ट्स, एंड लाइक अगेन इंडिया में हम जैसे आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स बहुत करते हुए आए हैं कि लाइक नॉन अलाइंड था हमारा तो वही चलता रहा, तो बट आई पर्सनली एम अ बिलीवर ऑफ रियल पॉलिटिक्स, जो से इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं कि लाइक जो आपके फायदेमंद का है आप उस पर फोकस करो एंड उस अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करो। तो अगर इसमें देखें तो अराउंड 60% ऑफ आवर मिलिट्री हार्डवेयर लाइक स्टिल डिपेंड्स ऑन रशिया, लाइक उसकी मतलब रिपेयर वगैरह के लिए एंड एवरीथिंग, एंड ये इसके बाद लाइक जब हम लास्ट 20-25 ईयर से डाइवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी अभी भी 60% काफी ज्यादा अभी भी हमारा डिपेंडेंस है, एंड देन अगेन इसमें फिर वही पॉइंट आ जाता है कि हम जैसे ऑयल वगैरह भी बाय करते हैं रशिया से, तो रशिया हमें थोड़ा सा कम उसमें भी देता है, एंड रशिया का हमारे यूएनएससी एंड वैसे भी उसके अलावा एक कनेक्शन रहा है, डीप कनेक्शन रहा है, चाहे रशिया चेंज हो रहा हो या रशिया काइंड ऑफ अलाइन कर रहा हो टू द चाइनीज साइड, बट देन अभी तक भी हमारा काफी इम्पैक्टफुल रिलेशनशिप रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें भी हमें सोचना पड़ेगा, बट देन एट द एंड हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आया था यूएस, या यूक्रेन के लिए यूएस ने बहुत ज्यादा कुछ करा नहीं, काइंड ऑफ अपने ट्रूप्स भेजना या समथिंग लाइक दैट, तो लाइक कि क्या अगर चाइना इंडिया पे कुछ ऐसा मेजर असॉल्ट करता है, तो लाइक कि जो यूएस इतना ज्यादा पॉइंट आउट करता रहा है कि भाई ये इंडिया पैसिफिक है, हम इंडिया की मदद करेंगे, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्या वो इतनी एक्सटेंट मदद के लिए आएगा या नहीं, बिकॉज अगर देखें तो अभी भी इंडिया की बॉर्डर पर लाइक ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से चाइनीज सोल्जर्स बैठे हैं, बट स्टिल लाइक बैठे ही हैं एंड ऑफ कुछ चेंज नहीं हो रहा है वो स्टेटस को में, तो लाइक वो भी एक फैक्चुअल पॉइंट है कि अगर ब्लॉक डिसाइड करने में इंडिया एंड उसके लीडर्स को देखना पड़ेगा आई गेस।
I think that Russia, honestly, अगर हम neutral भी रहते हैं तो Russia would still maintain a good relationship with us because as of early evening today, the Russian armed forces allowed Indian Ukrainians to pass through Qatar. And I think that is a very bold statement to make, that in Russia will always be a friend Pass of through India. Qatar, I didn't understand that point. मतलब Like they airspace cannot तो directly over they can't directly go over the airspace of Ukraine, but they can pass through Qatar. बट रशिया का तो कंट्रोल है ही ना यूक्रेन की एयर स्पेस और अपनी एयर हाँ स्पेस के अलावा तभी कहीं। एक्चुअली यूक्रेन की एयर स्पेस में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. हाँ The ओके the फिर helicopters and या all are always roaming There are around. no flights that are passing through it. So that is why they're diverting. हाँ वही तो I Exactly. just have a recent statement from Ministry of Defense Russia that they have said Russian military says first day of Ukraine invasion was successful. So like Okay, cool. उन्होंने अब clock out कर लिया है like again following their communism and socialist rule 8-hour work 8-hour sleep 8-hour for themselves they have done their first day's work. Yes, Jaskaran. So I was adding to the previous point, which I don't completely remember now. What were we talking about before this? Yeah, यूक्रेन मतलब यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को जाने दे रहा है रशिया. Right. So by maintaining a neutral position, I'm not really saying that what Russia did was wrong. We are basically subsiding with Russia to some extent because if there's a, let's suppose a more extreme example where there's a genocide going on, right? And if you're not denouncing the genocide, you are kind of balancing towards the genocidal party more than the rest of the world, if you really think about it, because uh, that's how aggression goes, right? If there is aggression on one side and you're not denouncing it, then you're basically in some silent way supporting that aggression. एग्जैक्टली अब लाइक फिर वही तो मेरे को थोड़ा पॉइंट लगता है कि ठीक है आप अपनी मतलब एक दो टाइप की चीजें होती है लाइक जैसे हम अपनी फोर्स को भी आर्म फोर्सेस को कहते हैं डिफेंस फोर्सेस है ना कि लाइक वो हमारे देश के डिफेंस के लिए बनी है लाइक मतलब अगर एक मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज का पॉइंट यही रहता है कि जो आपकी आर्म फोर्सेस हैं दे आर यूज टू लाइक दे आर मेंट टू बी यूज्ड फॉर योर डिफेंस ओनली नॉट फॉर अग्रेशन तो लाइक मतलब बेसिकली आई अंडरस्टैंड द पॉइंट कि ठीक है मतलब ये कह रहा है पुतिन या काइंड ऑफ रशियन एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि भाई अगर हम ऐसा फोर्स वगैरह यूज ना करते नेसेसिटी मतलब इनकी इतनी नेसेसिटी है इस वक्त पे कि लाइक कि नेटो के अंडर चला जाता या कि काइंड ऑफ हमारे इस पॉइंट ऑफ स्फीयर से बाहर चला जाता बट देन अगेन इट्स अ फिलोसफिकल थिंग ना लाइक इट विल हैपन इन फ्यूचर और आप अभी से भी ऐसा कुछ वो नहीं है पॉइंट बहुत ज्यादा कि लाइक आप एक प्री एमिनेंट स्ट्राइक करके एक प्री एमिनेंट थ्रेट को स्टॉप कर रहे हो देन फिर वही है कि अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई दिस लाइक देन अगेन एक पॉइंट